Namaskar. Hello and welcome to yet another episode of Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Welcome. And I'm your host Dr. Divya Agarwal. And we are today discussing something very beautiful and interesting. So before we start that, let me just tell you that we'll be taking all your questions after the show. So please stay tuned till the end and also keep showering your love and keep tapping the heart button. So as the winters arrive, we all have concerns related to knee pains, our other joint issues also start cropping up. So to discuss all that and to debunk all the myths associated with that, we have with us a very eminent orthopedic surgeon, founder and director of Neem Tree Healthcare, who has presence in more than 20 centers. And not only that, he is also the director for robotic knee replacement surgeries at Fortis Vasant Kunj. And we have with us none other than Dr. Pankaj Bajaj. Namaskar, sir. Namaskar. Thank you, Divya. So, with several awards and accolades which are adorning his career, he has still agreed to spare time with us and discuss your queries and concerns. So keep showering your love and keep commenting in the comment box so that we can take up your questions after the show. So doctor, the first question that all the viewers have already messaged me a lot because we have been posting for a while now. So the old injuries and pains resurface during the winter. ऐसा क्यों है कि ये दर्दें दोबारा से आ जाती हैं जब भी winters होते हैं? Is it a myth or is it actually the true story and a fact? दिव्या, नो, इट्स अ फैक्ट. ये बिल्कुल सच्चाई है. जब भी विंटर्स आती हैं और टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो जॉइंट्स के पेन, और या पहले आपको कहीं चोट लगी हुई है, किसी भी पार्ट में मसल इंजरी हुई है या कोई फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पेन्स बढ़ जाते हैं. उसका एक लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीज़न है. बिकॉज जब भी कहीं पे इंजरी होती है तो वहाँ की ब्लड सप्लाई यूजुअली अफेक्ट होती है. सिमिलरली जब किसी को जॉइंट पेन्स होते हैं एंड जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन या आर्थराइटिस है, वहाँ ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड होती है. जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप करता है, सर्कुलेशन अफेक्ट होता है. बिकॉज एज वी ऑल नो, जब सर्दियाँ आती हैं तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है. आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों की फिंगर्स, टोज, उनके डिसकलरेशन हो जाती है क्योंकि ब्लड फ्लो कम होता है. तो ऐसे ही जब जॉइंट्स के पास या पुरानी इंजरीज के पास ब्लड फ्लो कम होता है, that leads to more muscle pain and spasm. जब मसल स्पाज्म में, मतलब जो मसल्स थोड़ी टाइट हो जाती हैं, जॉइंट्स ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो वो एरिया ज्यादा पेन करने लगता है. दूसरा रीजन होता है सर्दियों में बाहर का प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू द बॉडी. उसकी वजह से भी, प्रेशर कम होने की वजह से भी जॉइंट पेन्स या वो इंजरी वाले एरियाज में पेन बढ़ जाती है. इट हैज अ लॉजिकल रीजन. So that means it is actually a fact, and सच में सर्दियों में जो पुरानी दर्दें हैं वो वापस आ जाती हैं. It resurfaces and all our grandparents and all our senior members in the family, they all keep saying that. So that means we should understand that they all are saying true. So doctor, knee replacement surgery हम कब कंसिडर कर सकते हैं? I mean, generally people have a constraint that वो नहीं जाना चाहते सर्जरी के लिए, बट आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे सारे व्यूअर्स को कि कब उनको अब ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि अब सर्जरी इज मैंडेटरी एंड यू शुड ऑप्ट फॉर इट? देखिए, बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं. लोग इस सर्जरी के बारे में, इस सर्जरी को करवाने में अभी भी आसानी से तैयार नहीं होते, जो कि एक ठीक राय नहीं है. बिकॉज जब भी आपके जॉइंट्स, नी जॉइंट, जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम करते हैं, नी जॉइंट्स इतने डैमेज हो जाएं कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी सोशल लाइफ को एक्टिव नहीं रख पा रहे हैं, या आपको रेगुलर पेन किलर्स की ज़रूरत है, चलने में मुश्किल है, तो उस समय नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है. अगर ये सब चीज़ें आप मैनेज कर पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है नी रिप्लेसमेंट करवाना है. लेकिन अगर इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं तो नी रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोसीजर्स इन ऑर्थोपेडिक्स. मिथ्स जो इसके साथ जनरली लोग परेशान होते हैं कि सर्जरी में पेन बहुत होता है, सर्जरी के बाद रिकवरी में पेन बहुत होता है, मूवमेंट्स नहीं आती हैं, आपको चलने में परेशानी होती है. ये सब एक मिथ है. आजकल जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं वो
उसके साथ अगर हम सर्जरीज करते हैं तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड वन शुड नॉट डिले द सर्जरी। डिले करने से और परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज होते हैं, रादर देन हम वेट करें और सर्जरी को बाद में करवाएं, उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। So that's a wonderful advice the doctor has given us. डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको दर्द है, आपको पेन है, डिस्कम्फर्ट है, आपकी डे टू डे एक्टिविटी में hindrance आ रही है, then why not choose these new procedures and innovative technologies that science has offered us? And we have eminent doctors that like Dr. Pankaj Bajaj with us. So definitely you can connect and any time opt for the surgeries. It is such a comfortable procedure, as doctor has rightly said. एज सच जो मिथ्स हैं कि बाद में बहुत पेन होती है, मूवमेंट्स नहीं होते, इट इज़ ऑल अ मिथ. इट इज़ अ वेरी सेफ एंड अ सक्सेसफुल सर्जरी विच हैज़ अ वेरी गुड रेट ऑफ सक्सेस. सो डॉक्टर, क्या ऐसे तरीके या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जिनकी वजह से कि आपके नी एंड जॉइंट में जो कंसर्न्स हैं उनको डिले किया जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है? देखिए, किसी भी चीज़ में प्रिकॉशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है. जैसे आजकल हमने देखा है कि नी पेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है इवन अमंग यंगस्टर्स एंड मिडिल एज ग्रुप. उस एज ग्रुप में भी पहले जनरली हम देखते थे या तो किसी को एक डिसीज जैसे रोमेटॉइड गठिया होती थी या ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं वो जॉइंट्स में पेन होता था. लेकिन अब यंग एंड मिडिल एज ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम बड़ी प्रेवलेंट है. नी पेन इज़ वेरी कॉमन, शोल्डर पेन इज़ वेरी कॉमन. इसके रीजंस हैं हमारे पॉस्चर्स, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा वर्किंग पैटर्न, हमारी डाइट, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, एक रेगुलर एक्सरसाइजेस को हमने अडॉप्ट नहीं किया हुआ है, और अगर हम एक प्रिकॉशन जो जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए लेनी चाहिए, जैसे मैं नी का एग्जांपल देता हूँ. अगर हम स्क्वाट्स बहुत करते हैं या हमारी हैबिट है क्रॉस लेगेड चौकड़ी मार के बैठने की, या स्टेयर क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा है, उससे नी जॉइंट्स पे ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स प्रेशर पड़ता है देन जब हम खड़े होते हैं. तो ऑब्वियसली वो चीज नी जॉइंट्स को ज्यादा अफेक्ट करेगी और जल्दी चेंजेस आएंगे नी जॉइंट में विच लीड टू डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट. तो ये सब चीजें, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइजेस, पोस्चर मेंटेनेंस, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं टू कीप द जॉइंट्स हेल्दी. Okay, so that's a wonderful advice the doctor has given us. Prevention is always better than cure. So आप जो एक्टिविटीज़ जिनसे आपके जॉइंट्स, चाहे वो नी जॉइंट हो, वो शोल्डर जॉइंट हो, वो एल्बो जॉइंट हो, आपके जॉइंट्स में अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर आता है, वो आपके नीज को या अदर जॉइंट्स को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा. सो यू शुड अवॉइड दैट एंड यू शुड ऑलवेज कीप ऑन एक्सरसाइजिंग सो दैट आपकी मसल बिल्डअप हो एंड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे. सो ऑल दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So before we proceed further, we will again request all the viewers to tap onto the heart button and shower us lots and lots of love. And I am your host, Dr. Divya Agarwal, and we are discussing about your joint concerns on Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, an educational initiative by Dr. Preeti Seth. And we are with us, We have with us today Dr. Pankaj Bajaj, who is an eminent orthopedic surgeon, and he's also the founder and director of Neem Tree Healthcare. So, Doctor, टेनिस एल्बो एंड फ्रोजन शोल्डर, ये भी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल हम बहुत सुनते हैं. सो क्या है ये कंडीशंस, क्या इनका पोटेंशियल ट्रीटमेंट है और कैसे हो जाती है ये प्रॉब्लम्स? दिव्या, टेनिस एल्बो बेसिकली एल्बो का एक इशू है जिसमें कोई भी अगर आप एक्टिविटी करते हो इन योर डेली रूटीन, जैसे आपको कोई भी चीज़, इवन अ ग्लास ऑफ वाटर और अ जग यू हैव टू लिफ्ट, वो उठाने में भी एल्बो में इस जगह में पेन होता है. यूजुअली दिस हैपन्स इन डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में या एक्सरसाइजेस के ड्यूरिंग आपको कोई इंजरी हो जाती है जिसमें सडन जर्क रिस्ट पे लगता है, बिकॉज रिस्ट को ये मूवमेंट वाली मसल्स सारी यहाँ एल्बो से आती हैं, एंड वेन एवर देयर इज अ जर्की मूवमेंट, इंजरी एल्बो पे होती है, एंड दिस एरिया ऑफ द एल्बो, आउटर साइड ऑफ द एल्बो गेट्स अफेक्टेड. जहाँ कोई भी एक्टिविटी करने में, डेली रूटीन एक्टिविटीज कुछ भी आपको करनी है जिसमें रिस्ट को फोर्सफुली यूज करना है, इट विल गिव यू पेन. दैट इज बेसिकली टेनिस एल्बो. हमेशा जैसे ही इस तरह की कोई पेन स्टार्ट होती है और कभी आपको लगे कि इस तरह की कोई इंजरी हुई है जिसके 1-2 दिन बाद आपको यहाँ पेन स्टार्ट हुआ है,
that means that problem has started. The early you start the treatment, it will get controlled. बहुत बेसिक ट्रीटमेंट करना होता है, आइस पैक्स लगाने हैं, आजकल ऑइंटमेंट्स जेल अवेलेबल हैं, वी कैन अप्लाई दैट, एंड कोई माइल्ड पेन किलर्स विद योर डॉक्टर्स एडवाइस अगर आप ले लेते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है. प्रिकॉशंस लेनी होती हैं कि कोई री इंजरी नहीं हो, कोई हैवी चीज़ आप हैंडल नहीं करो. बट अगर ट्रीटमेंट डिले कर दिया आपने एंड 10-15 days 20 days बाद आप मेडिकल एडवाइस के लिए जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक तो रिकवरी डिले हो जाती है, एंड कई बार हमें इंजेक्शंस यूज करने पड़ते हैं लोकलाइज, जो स्टीरॉयड के होते हैं या आजकल प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम यूज करते हैं. दे इट्स अ ट्रीटेबल कंडीशन, इवन इफ इट इज डिलेड इट कैन बी, बट डेफिनेटली वो ड्यूरेशन भी लॉन्ग हो जाती है और टाइम भी लगता है. जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएगा. फिजियोथेरेपी ऑल्सो हेल्प्स इन दिस. तो फिजियोथेरेपी की कुछ मोडालिटीज होती हैं बाय विच इट कैन बी ट्रीटेड. Next you asked about shoulder, frozen shoulder, right? Yeah. So frozen shoulder is a common and a broad term, जिसमें हमारी शोल्डर की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं एंड शोल्डर चलाने में पेन होता है. वी कांट टेक द शोल्डर बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि कई बार शोल्डर में इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से अंदर स्वेलिंग हुई एंड देन ग्रेजुअली इट लीड्स टू फ्रोजन शोल्डर. कुछ लोगों में स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं अंदर, हमारी कुछ बोन्स और मसल्स के बीच में इस तरह की मूवमेंट रहती है कि जिससे मसल्स बोन के अगेंस्ट रब करती हैं और उसमें ग्रेजुअली स्वेलिंग हो जाती है एंड इट लीड्स टू फ्रोजन शोल्डर. अगेन फ्रोजन शोल्डर इन टाइम इफ स्टार्टेड, ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड, बड़े अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें फिजियोथेरेपी, हॉट फर्मेंटेशन और आइस पैक्स डिपेंडिंग अपॉन उसका कॉज क्या है, ऑइंटमेंट्स, एंड again the injections has role in frozen shoulder. So it is definitely very well treatable thing, but कई बार ये सब करने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता तो फिर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस लाइक अल्ट्रासाउंड और MRI करके देखना होता है कि what is the basic cause of it, and then we treat that cause and it can be very much cured. थैंक यू सो मच डॉक्टर. सो इट इज़ ग्लैड टू अंडरस्टैंड दैट PRP से स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ के लिए नहीं, नी हेल्थ एंड जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. एंड डेफिनेटली एज डॉक्टर हैज़ अगेन री एम्फसाइज कि अगर आप पहले ही इनिशियल स्टेजेस में उसको कंसिडर करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को, तो आप सिंपलर ट्रीटमेंट मोडालिटी से उसको रिकवर कर सकते हैं, लाइक फिजियोथेरेपी, आइस पैक्स. एंड अगर ज़्यादा डिले करेंगे तो डेफिनेटली फर्दर इंटरवेंशन विल बी रिक्वायर्ड. सो डॉक्टर, क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर किसी को ओल्ड एज में जाके जॉइंट कंसर्न्स होने ही होने हैं? ऐसा नहीं है दिव्य. देखिए, ओल्ड एज में जो हमारी जॉइंट की प्रॉब्लम्स रहती हैं यूजुअली वेयर एंड टेयर वाली होती हैं. जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी एज बढ़ती है, जिस तरह बाकी पार्ट्स में डीजेनरेशन होती है, वेयर एंड टेयर होता है. जैसे कि आईज में कैटरैक्ट इज वेरी कॉमन, वी नो, सबको मालूम है कि मोतिया हो जाता है. बट जॉइंट्स का क्योंकि दिखता नहीं है, जिसको फील होता है वही बता सकता है. तो ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं एट सर्टेन एज, एंड जॉइंट्स का यूजुअली डीजेनरेशन 40-45 के बाद स्टार्ट होता है इन मोस्ट ऑफ द पीपल. इन ओल्ड एज ये प्रॉब्लम सबको आती है, लेकिन किसी को कम, किसी को ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. आपने जॉइंट्स की केयर कैसे की है, जब वो प्रॉब्लम शुरू हुई तो आपने उसके लिए जो एक्सरसाइजेस या जो सप्लीमेंट्स लेने थे वो इन टाइम लिए नहीं, हाउ हेल्दी योर डाइट एंड लाइफस्टाइल वाज, एक्सरसाइजेस कितनी आपने उनकी रेगुलर की, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स मैटर करते हैं. सो इट विल हैपन टू एवरीवन, सबको होगा जो ओल्ड एज की तरफ जाएंगे, बट उसकी इंटेंसिटी या जॉइंट्स को डैमेज जो है वो सबका वेरी करेगा. किसी को माइल्ड हो सकता है और किसी को सिवियर हो सकता है, वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फाइन. सो डीजेनरेटिव चेंजेस सभी में आने हैं एंड ओल्ड एज में धीरे धीरे जाके जॉइंट कंसर्न सभी को होंगे. डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट वेरी करेगा आपके लाइफस्टाइल, आपके डाइटरी मॉडिफिकेशंस एंड ऑल द केयर, गुड केयर दैट यू आर टेकिंग केयर इन योर अर्ली ईयर्स. सो अभी से ध्यान देना शुरू करें ताकि ओल्ड एज में आप उस इम्पैक्ट को कम से कम रख पाएँ. सो डॉक्टर, वर्क प्लेस ergonomics is a buzzword these days. And we were also discussing few days back in the evening when we were sitting. So I would want that you should share with this medium, with all the viewers and all the corporates who are out there, what is it, how it can be beneficial to them, and why it is required in today's world.
Friends, these days we all know आजकल और पहले जैसे हम काम करते थे वो उस स्टाइल में उस काम करने के तरीके में टोटली डिफरेंट है। आजकल हमारी लॉन्ग सिटिंग्स हैं, इनसाइड द कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा काम है रादर देन आउटसाइड। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सिटिंग ऑन लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स। सो जितने भी कॉरपोरेट्स और जितने भी सेंटर्स हैं जहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन सिटिंग्स होती है, एर्गोनॉमिक्स हैज़ अ मेजर रोल। जिसमें क्या चीज़ें आती हैं, लाइक आपकी टेबल एंड चेयर की हाइट इज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसमें अगर वो प्रॉपरली अलाइन नहीं होगी तो विल लीड टू डेफिनेटली लॉट ऑफ इश्यूज। सेम वे आपकी पोजीशन ऑफ द लैपटॉप, पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने हैंड्स को कैसे यूज कर रहे हैं, आप अपने नेक एंड बैक का केयर कैसे कर रहे हैं, आपकी चेयर कैसी है, ये सब चीजें एर्गोनॉमिक्स का पार्ट है जिनका अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो डेफिनेटली ईदर ऑफ आवर थिंग्स, जिसमें सबसे कॉमन होता है नेक, बैक, योर नीज, योर रिस्ट, योर फिंगर्स, ये सब चीजें अफेक्ट होंगी ही होंगी कंफर्ट में, ईदर टुडे और आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू मंथ्स, अगर आप इनका प्रॉपरली यूज करोगे। एंड एर्गोनॉमिक्स इज लाइक अ साइंटिफिक वर्ड, बट एक कॉमन वर्ड में कहूं कि अगर आप तरीके से सब चीजों को इस्तेमाल करते हो, you will never land up with any problem and will have a healthy life, healthy mind and healthy work style. Wonderfully explained, doctor. So it is a shout out to all the corporates and all the workplaces. Please take care of your employees. Understand how you can make the working style better for them, and the regular workshop, regular intervention of the able doctors and healthcare professionals is definitely advised. So doctor, जब हम वर्क प्लेस एर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कार्पल टनल सिंड्रोम इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो कि लैपटॉप एंड पुअर पोस्चर की वजह से हो जाता है. सो आई वुड वांट दैट यू प्लीज शेयर इनसाइट अबाउट दिस. So carpal tunnel syndrome, basically what happens, I would like to explain a bit. हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व जाती है यहाँ रिस्ट से, जो थंब एंड दीज टू फिंगर्स की मूवमेंट और इनकी सेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. वो नर्व हमारे डीप स्ट्रक्चर के नीचे जाती है, ऊपर हमारी फिंगर्स को मूव करने वाले टेंडन्स होते हैं, मसल टेंडन्स, which help in moving these fingers. And all of us know the thumb and these two fingers are the most important to use anything. And when we are using laptop, we mostly use these three fingers very frequently, repetitively and continuously. That is the reason. इन्हीं फिंगर्स को यूज जब हम करते हैं और रेपिटेटिवली यूज कर रहे हैं, तो जो मसल्स टेंडन्स इसके ऊपर से जा रहे हैं उनमें माइक्रो इंजरीज होती रहती हैं एंड दे गेट इन्फ्लेम्ड, स्वोलन, जिसकी वजह से धीरे धीरे रिस्ट के इस पार्ट में स्वेलिंग आती है और जहां नर्व नीचे जा रही है उसके ऊपर के टिश्यू को थिक कर देती है बिल्कुल, जिससे वो नर्व प्रेस होना शुरू हो जाती है एंड दैट इज कॉल्ड कार्पल टनल, जिसकी वजह से आपको इन तीन फिंगर्स, थंब एंड टू फिंगर्स में हैवीनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, ग्रिप वीक हो जाएगी, ये सब चीजें होने लगती हैं. इट इज प्रिवेंटेबल एंड इफ इट हैपेंस इट इज क्योरेबल, बट व्हाई टू क्योर, व्हाई नॉट टू प्रिवेंट? यू कैन प्रिवेंट इट if you keep your wrist in this position continuously and doing repetitive movements will definitely lead to that. Keep on moving your wrist in between, keep it in a proper position. After certain movements, give rest, just do stretching of the fingers. That will definitely help you in reducing it and preventing it. Wonderfully explained, doctor. And why not take care to prevent in the initial phase, and we should all take care of this thing. सो डॉक्टर, रनिंग जनरली कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए जब आपको नी में कंसर्न्स हो, पर जो लोग मैराथन करना चाहते हैं, जो रनिंग लवर्स हैं, व्हाट इज योर एडवाइस? इट शुड बी डन और इट शुडंट बी डन? व्हाट इज द मिथ एंड व्हाट इज द फैक्ट? No, Divya, running is a wonderful exercise, but if done properly, anything you do in a wrong way will lead to complications. Same way is with running. If you don't wear proper footwear, if your surface is not good, if you don't achieve your the amount of running you want to do gradually, definitely will lead to problems. अगर आपने फुटवेयर गलत पहना हुआ, हार्ड सरफेस पे आपने शुरू की और सालों से और महीनों से तो आपने रनिंग इवन वॉक भी नहीं किया, एंड वन डे यू स्टार्टेड रनिंग ऑन अ हार्ड सरफेस विद रॉन्ग फुटवेयर, इवन अ किलोमीटर ऑफ रनिंग विल गिव यू ट्रबल.
But if you go gradually, adapt your body to it, adapt your lower limbs, your muscle structures to that, you can run any amount. That's a very good exercise. Wonderful. And what about heels? And people generally say कि heels पहनने से आपके joints में concern होता Well, है. that's very important for females. That's not a problem, provided you are one used to it. You don't have any knee or back issues. If you have any knee, lower limbs or back issues there, then be careful. You have to choose a proper footwear. Rather than wearing long heels, you wear block. That will support your whole foot, will not trouble you. And don't wear for long hours. You can use it for shorter duration. Choosing the footwear is very important. You can do all the things. If a wrong footwear is there, it will lead to problems everywhere. So, अगर आपने सही footwear, सही heel वाला footwear डाला हुआ, it is not a problem. But आपको अपनी body के हिसाब से, if you are overweight, if you have back issues, if you have knee issues, any of the lower limb issues is if giving you pain, then be careful. Use it for shorter duration if required, or use it जब आपका सब पेन और सब कुछ ठीक हो जाए. That's a wonderful piece of information. So I'm sure you have got your answers now. Please choose your footwears wisely, and definitely if you are a lover like me and want to wear heels and you also have knee and back concerns, then make sure that the footwear that you're choosing is correct and the heels are not very pointed. If you're running lover like us, then definitely you have to choose your the shoes appropriately, and also the posture while you're running is very, very, very important, because the wrong posture while running can also hurt your knees more and can lead to troubles later. So doctor, जिम के वर्कआउट्स के साथ तो बहुत सारी स्टोरीज एसोसिएटेड है. ट्रेडमिल इज लाइक the culprit all the time. It hurts your knees, it damages your joints. So is it a myth, or there is some fact associated with it? No, Divya, definitely when you go to gym and do your exercises, I would like to give one very simple advice. Don't follow your instructor blindly. You know your body. If you start doing certain exercises, कोई आपने exercises शुरू की जो आपके instructor ने करवाई, and you're not comfortable with it, उससे कुछ pain हुआ, कोई minor injuries हुई, then tell them, explain them, and if अगर injury ज़्यादा है तो immediately आप specialist को consult करो. Gym exercises, definitely they have very good role to keep you healthy and fit. But अगर properly की जाएंगी तभी help करेंगी. Why we do exercises? क्यों जाते हैं हम gym? Better feel करने के लिए and keep yourself healthy. बीमार होने के लिए या कोई पेन लेने के लिए नहीं. So do it in a proper way. Instructor को properly follow करना है, but instructor should have right advice. That you should be very clear about it. So definitely gym exercises, they are very good for to keep you healthy, your mind, body, as well as your all joints and muscles. Yeah, certainly. We have discussed this earlier also in our previous episodes, that the exercising is a wonderful thing for your mental health as well, because the good hormones that are released also keep you very positive, and you have to just choose the right kind of a instructor for you, so that you are following a right advice, and definitely do not follow the person blindly. Your body gives you all the information and signals. Like in Pacholi, we always preach intuitive dietary options also, and intuitive exercising options. So that is always good. Your body is a wonderful tool. It gives you all the information already. You just have to follow all the signals. So doctor, आजकल बहुत recent technological advancements हैं in the surgeries and robotic surgeries हैं. So this is a wonderful medium. I would want my viewers to understand क्या ऐसी advancements हैं जिसकी वजह से कि अब हमारी चीज़ें easier हो गई हैं, and ऐसी कौन सी advancements हैं जिनके बारे में आप अभी share करना चाहेंगे? Divya, orthopedics these days is very advanced. If I compare orthopedic treatment 20-25 years back and today, it has a lot of changes, lot of advancements. It's more of now technically advanced, lot of technology dependent. जो हम पहले सब कुछ मैनुअल करते थे, अगर पुरानी बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट या तो मेडिसिन से या प्लास्टर्स में ट्रीट किए जाते थे, एंड हार्डली दीज डेज प्लास्टर्स आर यूज्ड अनटिल अनलेस उसका ट्रीटमेंट ही उससे होना है.
If we talk about fractures, we have all kind of devices, plates, rods, with all modern instrumentation and technology. They are built according to the shape of bones, where they can align the bones after they are fractured and बिल्कुल सेम पोजीशन में बोन जुड़ती है जिसमें पहले होती है. सेम वे स्पोर्ट्स इंजरीज में these days keyhole surgeries, we call it arthroscopic surgery in orthopedics, it is really advanced. Any of the joints like knee, shoulder, hip, elbow, wrist, there are so many procedures जिनको हमें पहले open करना पड़ता था. So if you open a joint, definitely you will be hurting the other structures, you will be damaging the normal tissue to reach the joint. But arthroscopically we just make few holes. Like all of you must be aware of gallbladder surgery, because that is one of the commonest surgeries and बहुत सालों से हो रही है. वैसे ही orthopedic में it is arthroscopic surgery. We reach the joint direct to the spot where the problem is and cure that, treat that, operate that. So it's a wonderful procedure and there is a lot of advancement in it. Definitely needs special training in those procedures, but once done properly has wonderful result. Similarly, when the joints are damaged, we do joint replacements. These days, all of us aware knee replacement is one of the commonest joint replacement done. Similarly, hip replacement, shoulder replacement. These three are joints which are done commonly. Other joints like ankle, wrist, they are not that successfully done. But in these knee, hip joint replacement, we have these days very good joints available. The quality, the precision, the fitting of the joint is absolutely anatomical, जैसे कि normal joints होते हैं. And robotic has changed all the scenarios of that. We, with robotic assisted joint replacement surgeries, we have better planning in mind before we go to the operation theater. We achieve better alignment of the joint, we achieve better precision of fitting of the joint, which gives lot of good results. बहुत बढ़िया output आती है, better alignment achieve होती है, post operative पेन कम होता है, क्योंकि कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जब हम मैनुअली करते हैं तो हम वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो रोबोटिक सर्जरी में हम अवॉइड करते हैं, जो फर्दर डैमेज करते हैं कहीं ना कहीं. सो पेन कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है. सो ऑल दीज थिंग्स हैव रियली मेक अस मोर प्रिसाइज, comfortable and better outcome for the patients also. Wonderful. So medical science is now totally equipped with a good surgery procedure wherein you don't need to cut the joint or maybe open the joint appropriately, saying कि आपको बहुत comfortably आप कम blood loss से आप ज़्यादा intervention किए बिना आप उस problem को treat कर सकते हैं. So you don't have to worry कि आपको आपका recovery time भी I'm sure improve होगा because of less of the open wound surgeries. So doctor, क्या ऐसा आपका एडवाइस है जो आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म अपना जॉइंट हेल्थ मेंटेन करना है, आपको अपनी बोन्स की हेल्थ मेंटेन करनी है, तो डॉक्टर पंकज बजाज का क्या हेल्थ टिप है? Friends, a good healthy lifestyle is the most important. So in healthy lifestyle, what? One, proper and a healthy diet, which most of us don't follow these days. That's very important. Because all of us, we know most of us are deficient of vitamin D, B12 these days. The most common cause for that is poor dietary habits. Second, a good healthy lifestyle with a proper exercises every day. A regular walks, cardio exercises. Don't go for gymming. Don't aim for gymming. That's like definitely to make your muscles, build up your muscles. But to keep you healthy, a 30 minutes walk every day is sufficient to keep your heart, brain, your muscles, your limbs healthy. So a diet, a proper diet, proper exercises, daily exercises. Avoid having liquor and smoking as much as possible, or do it in a very controlled way. That will definitely help you to keep your bone and joints healthy. Regular exercises of the joint, that's very important. So taking the precautions, like if you hurt any of your joint or any part,
take proper care of it for certain times, and then start doing regular exercises. So all these things, if you do in a proper way, will give you much better and healthy joints and longer duration. वंडरफुल. सो डॉक्टर आजकल ये बोलते हैं कि पहले वेस्टर्न कमोड इतना कॉमन नहीं था एंड इट वाज द इंडियन वे ऑफ यूजिंग द वॉशरूम्स दैट हैज आल्सो इम्पैक्टेड अ लॉट एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रिवलेंट यूज आजकल आपके जॉइंट्स अप्रोप्रिएटली यूज नहीं होते हैं. दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग. सो इज इट अ truth or it is a myth? Yeah, Divya, it's true. What happened, like in past, if we talk few years back, like in 90s and early 2000, still there were a lot of people who were using Indian style of toilets where you have to squat, and squatting puts a lot of pressure over the knees. But that habit we used to have from the beginning, since your childhood, since your early years. So when you have a habit and your joints are used to those activities from the early stage of life, your joint starts working that way, and whenever you do, it doesn't put that pressure. But nowadays, Western commodes are very commonly used, available everywhere. One uses that on a routine basis. So if you start doing squatting in between off and on, will definitely stress your joint and give pain. And will lead to definitely early changes in the joints, which has to come at the later age. So that makes the difference. So that means अगर initiate करना भी है तो you have to initiate from the beginning. बीच में initiate करेंगे तो it will be more of a trouble. So doctor, we preach holistic approach for any of our treatments. What is your say on it? Does Neem Tree also believe in that? What is your policy? How orthopedic surgeon contributes into a holistic care for joint concerns and everything? Yes, definitely yoga. We all know it's a wonderful thing. If done properly, yoga is a proper stretching exercises for all the body and joints. If we do it on regular basis, you will never get muscle stiffness. That reduces the chances of tear in the muscles. So yoga is a wonderful thing if done properly and on a regular basis. Meditation is again definitely that keeps your mind as well as the body healthy. In your body, all your muscles, joints, everything comes. And if stress is a major factor these days which affect your everything, your sleep cycle, your daily routine, your next day routine. If you do holistic things a bit, I'm not saying that you have to be into it all the way. A bit of it to keep your mind relaxed, to keep your stress free, have a proper sleep cycle, do certain yoga exercises to keep your body stretched properly and mobility is better, then उससे बहुत फर्क पड़ेगा, and this will help you to keep your joints, bones, everything healthy. Wonderfully expressed, doctor. So holistically, आप अगर चलेंगे yoga, ayurveda, potli, our massages, our oriental therapies, along with that, the modern day practice, all together is a wonderful therapy for your body, mind and health. So let's not dissociate any of the mental concerns and the physical concerns with each other. So everything has to get synchronized and move in accordance. So before I take up my last question, I would want to request all the viewers to just quickly add on all your questions in the comment section. We'll be taking it after the last question. And this is your host, Dr. Divya Agarwal, and we are discussing about your joint health with Dr. Pankaj Bajaj on Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, an educational series by Dr. Preeti Seth. So, Doctor, AI is the boom right now. So, AI in healthcare is also right now on rise. How do you foresee the future of orthopedic surgeries and everything in the AI in healthcare practices? Yeah, Divya, till now in healthcare, AI has played a major role in radiology, like in MRI, CT scan testing. To some extent in pathology, where the blood tests are done. But if we talk about the surgery branches like orthopedics, we have technology support of computer navigation, robotics, but still AI has helped us in our data management to
understand better in which age group what problem is more there and what kind of treatment, what kind of precautions they have to take. In that, definitely AI has helped us a lot. But if we talk about the treatment part where the surgical intervention is required, the robotics has really helped us. But AI still has to be in. Although in robotics, whatever software is there is all AI based. But if I talk about in our day-to-day usage, AI has a limited role in orthopedics till now. But definitely in future, the way it is going to be of really help. So AI and the revolution in the orthopedics will be definitely there, and we are just optimistic about it. Let's take our questions. So sir, one of the person is asking, robotic surgeries में surgery robots करते हैं क्या? Surgery हम ही करते हैं. Okay. So robots, basically what happens, I'll give you a brief. So when we plan a surgery, we do a pre-operative planning. So that is done mechanically with our experience. In robotics, we have a software where we do CT scan of the limb from hip to ankle to see how much alignment has changed. Then the CT scan reports are used in the software of the robot, and that guides us that this much alignment should be corrected. Now this is the pre-operative role of robotic, and now during surgery we have same role. We have to open the joint. Now when we have to in knee replacement, basically I would like to give you a short idea. It's actually not the replacement, it is the resurfacing of the bones. Joint is basically where the two bones move with each other. In our knee joint, the thigh bone, which is called femur, and leg bone, which is called tibia, they move on each other. So what we do in joint replacement, say these two bones are moving, so we shape them and the joint is just capping off that end. Now, when we do the surgery, we make the shape mechanically with saw bones, and that has to be done by us. In robotics, this shape is being done by the robot. So robotic arm is there which cut it very precisely, very sharp cuts are there so that the joint fitting is precise and perfect. So this is what robotic assistance is there with us. But I'm sure your question is answered. So doctors, one person is asking, if someone is suffering from extension in ankle bone, pain is persistent from long time, how can we cure it? Please suggest. मैं समझूं सूजन है, swelling है. So there is a pain which is persistent from long time. So अगर आपको इसमें पहले कभी इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी सूजन रह सकती है. अगर इंजरी नहीं हुई है तो आपको टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें सबसे पहले एक एक्सरे होना चाहिए देखने के लिए कि वो सूजन क्यों है. कई बार ब्लड में कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, जैसे कि यूरिक एसिड बढ़ने से भी एंकल में सूजन आ जाती है. वो यूरिक एसिड का टेस्ट या कुछ गठिया वगैरह, वो सब डिपेंड करता है आपको और क्या किसी जॉइंट में प्रॉब्लम है या नहीं है. सिर्फ एंकल में है तो ये बेसिक चीज़ें करवानी चाहिए, और अगर लंबे टाइम से चल रहा है तो आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे जॉइंट्स में डैमेज होना शुरू हो जाता है. सो दैट मीन्स सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको कंसर्न को जाके डायग्नोज कराएं कि क्यों पेन हो रहा है. पोस्ट दैट द ट्रीटमेंट विल बी सजेस्टेड टू यू. You can visit our doctor. Neem Tree Healthcare is there in Defence Colony, and you can definitely visit and take your patients there. So thank you so much, viewers, for being with us, and it was a wonderful enlightening session by Dr. Pankaj Bajaj, and I'm your host Dr. Divya Agarwal, and we were discussing about your joint health on Pacholi Aesthetics, on Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness. And stay tuned till we come up live again in the month of Jan with our next episode. Thank you so much, Doctor, for being with us. Thank you, everyone.